Morning student, this is lecture number first, chapter number 25. Today we are going to start this one, volume and surface area. So this chapter comprises of the volume and surface area of cube and cuboid. First of all, I am giving you the basic and fundamental concept about this one. What is volume and surface area? So first of all, we are taking cube. Cube होता क्या? First of all, cube has equal sides. Cube क्या होता है? Like a square. स्क्वायर सरफेस से बन के क्यूब बनता है. लेट अस सपोज वी हैव अ स्क्वायर सरफेस एंड स्क्वायर सरफेस हैज लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल. लेट अस सपोज this is L and this is B. Both are equal in this case. Length and breadth both are equal. That is equal to A and A. So the area of this one is A into A. A into A. Area which is equal to A square. So A square is the area of this surface. And similarly इस टाइप की 6 सरफेस जब मिलेंगी उनसे मिलके हमारा क्यूब बनेगा. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस वन इन दी ऑनलाइन लेक्चर्स, लास्ट ऑनलाइन लेक्चर. ओके, सो दिस वन इज द फिगर which is comprises of 6 faces of equal area which is equal to a square. Okay, so 6 surface. Number 1, let us suppose count करते हैं one by one. This one first surface, second one, third front, fourth back, fifth one right and sixth one left. Okay, so surface area, total surface area क्या होगा? एक का surface area L square या A square. अगर लेंथ हमारी दोनों की इक्वल है, लेट अस सपोज द side is equal to L, so L into L. L square is the area of one surface and we have total 6 number of surfaces. Okay, so 6 into L square, that is equal to 6 L square is the total surface area of this cube. Very simple. Now volume. वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेट अस सपोज हमारे पास कोई टैंक है, ये टैंक का बेस है एंड वी हैव टू फिल आउट दिस टैंक लाइक दिस वन. ओके, ये बेस है टैंक का और इसको हमने फिल करना है एंड बेस ऑफ द टैंक हैज इक्वल साइड L एंड L. सो दिस इज A स्क्वायर एंड अप टू द हाइट L हमने एक टैप लगाया एंड टैप से ये भर रहा है. ओके, सो वन बाय वन होगा क्या, जैसे जैसे पानी भरते जाएगा इसकी हाइट जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी एंड लास्ट इट इज गोइंग टू फिल आउट अप टू हाइट L. सो क्या हुआ? L into L area and area into height which is equal to L. So the total volume of this one is length into breadth into height, length into breadth into height, or we can say that area into height, because area of this surface is L into L which is equal to L square and height is L, so multiply with this one, so equal to L cube. So L cube is the volume of this cube. Okay, now the second one is cuboid. Cuboid की जब हम बात करते हैं, the only difference is that here L B H are different. इनमें से कोई दो सेम भी हो सकते हैं and but one must be different from the other two. ओके, ये तो L डिफरेंट होगा, बी एच इक्वल भी हो जाए तो चलेगा, अगर ना भी हो तो भी चलेगा. टोटल सर्फेस एरिया आप हैंड आउट करेंगे. सो हियर ऑल्सो वी हैव 6 सर्फेसेस. द फर्स्ट वन, upper surface which has a area equal to L into B because length into breadth, area. Similar surface is this one, L into B. So 2 L into B, 1 L into B and 1 L into B surface. Okay, 2 L into B होगी. Now second one, B into H and B into H. 2 B into H surfaces. So 2 B into H. B into H plus B into H. To 2 B into H. Okay. Now the third one, H into L. H into L. Front and back surface. This one is front and this one is back surface. This one. Okay, back side surface. So 2 H into L. So taking common as 2 LB, BH and HL. 2 LB plus BH plus HL is the total surface area of a cuboid. Okay. Now the volume. Volume is L into B into H, similar to this one, L into B into H. Here L, B, H all are same. So L into L into L, L cube is the volume, and here L into B, length into breadth into height. Because the area of this one is L into B and up to height H, so L into B into H is the volume of this surface. Okay, now we are going to discuss the exercise. Question number 1. In question number 1, we fourth part up to third part,
first, second, third are very simple, and you have to solve this one by your own. Length 5 centimeter, breadth this one, and HA. We have to find out surface area. So as we know, the length, breadth, and height are different, so it must be a cuboid. So surface area of cuboid is 2 LB plus BH plus H. Put the value of this one 5 into 1.5, because 2 LB, LB means L into B, plus B into H, B into H, and H into L. Okay, 2 into 7.5 plus 3.6 plus 12. So total surface area is 46.20. This is a completely based on the calculation. Now the fifth part. Fifth part is L equal to 11 by 2 centimeter, B equal to 4 centimeter, and H equal to 21 by 2 centimeter. Surface area, again same formula, 2 LB plus BH plus HL. Whenever you are going to solve in examination, you must have to apply the formula before solving the equation. Okay, this is mandatory for all. You have to write down the formula in a box, like this is the formula. So you have to put a box outside of this one, clearly visible, which is okay. So surface area 2 LB. Okay, solve this one, and this is your homework, and you have to solve this one by your own. Okay, second question. Surface area of cube is given as 6L square, and here we have L equal to 1 by 2 meter. Length of the cube is given as 1 by 2 meter, and we have to find out surface area. Surface area of cube is 6L square. 6 into L, L is 1 by 2 into 1 by 2, so cancel with this one. 3 by 2 centimeter square, sorry, this is centimeter. So 3 by 2 centimeter square is the surface area of this cube, because cube has equal length. Okay, all the sides are equal. So 1 by 2 into 1 by 2, 6L square, we are using here 6L square. Now the third question. In third question, we have given surface area of cube equal to 96 centimeter square. Okay, as we know, surface area of cube equal to 6L square, and which is given as 96. Cancel 6 with 96, that is equal to 16. L square equal to 16, and find out the value of L is under root 16, which is equal to 4 centimeter. So the side of the cube is equal to 4 centimeter. Now the fifth question. Fifth question is in fifth question we have given side of boxes L, B, H are given, and first of all you have to find out the surface area. Surface area is 2 LB plus BH plus HL. Okay, easily find out. Now cost of painting, we have given cost of painting rupees 2 per 40 centimeter square, means 40 centimeter square को पेंट करने में 2 रुपये का कॉस्ट आएगा, एंड वी हैव टोटल 376 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड दिस वन बाय 40, सो दैट हमारे पास जो वॉल्यूम, सॉरी, जितना हमको सरफेस एरिया में पेंट करना है वो डायरेक्टली हमारे पास आए. 40 से डिवाइड करा एंड 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू मल्टीप्लाई 2/40. 2/40 इसलिए करा क्योंकि डायरेक्ट हमको कॉस्ट दे रखी है ₹2 पर 40 सेंटीमीटर. सो 2/40 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. इट मीन्स 1/20. इसको डिवाइड करा 1880 रुपीज़ इज द total cost of painting this one. Now question number 6 and 7 are your homework, and 8th I am going to discuss. First one, rectangular room of side. This one rectangular room means cuboid होगा, because rectangular room में L और B अलग अलग होंगी. टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल. ओके, जब भी 4 वॉल की बात करते हैं हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर रूम मीन्स क्यूबॉइड. जब भी 4 वॉल की बात आएगी इसमें बॉटम और टॉप सरफेस नहीं आएगी, मीन्स जो छत है और जो फ्लोर है, फ्लोर नहीं आएगा. इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल कौन सा होगा? ओनली साइड वॉल. साइड वॉल्स आर द एरिया ऑफ 4 वॉल्स. L इंटू बी वाला ये नहीं आएगा. इट मीन्स अगर L इंटू बी नहीं आएगा सो एल बी वाला पोर्सन हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड बी एच प्लस एच एल हो जाएगा. सो बी एच प्लस एच एल इज हियर, बी एच प्लस एच एल. सो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया H फ्रॉम बोथ, H कॉमन लिया तो L प्लस बी. सो 2L प्लस बी इंटू H इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स. ओके, नाउ you have to just put the values here. 2L, L is 6 plus B 5 into H is 4. 6 plus 5 11, 11 into 8, 88 centimeter square is the area. Sorry, 88 meter square, because all the units are given in meter. Okay, now second part of this question, area to be painted 80% of the total. मीन्स जितना एरिया हमको पेंट करना है वो 80% है टोटल का. इट मीन्स कहीं पर डोर लगा होगा तो हम उसको पेंट नहीं करेंगे. ओके, सो 80% ऑफ टोटल एरिया. तो टोटल एरिया हमारे पास कितना था? 88 मीटर स्क्वायर. 2 BH प्लस HL से जब हमने निकाला सो 2L प्लस बी
88, सो 80% ऑफ 88 कितना होगा, ये हमको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। 80% ऑफ 88 मीन्स 4/5 बिकॉज 24 एंड 25 4/5 ऑफ दिस वन। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। एंड 1 लीटर पेंट में 18 मीटर स्क्वायर इन 1 कोट होता है एंड टोटल एरिया कवर्ड होगा 2 कोट में, बिकॉज क्वेश्चन में कहा है कि हमको 2 कोट करना है। सो अगर हमको 2 कोट करना है, ओके, सो टोटल एरिया टू बी पेंटेड in 1 coat is 70.4 meter square and total area covered in 2 coat. 2 coat means 70.4. 140.8 is total area. Okay, and 1 लीटर पेंट में हमारा 18 मीटर स्क्वायर 1 कोट में होता है. Okay, so total area to be painted is 140.8 meter square. So number of total paint needed is 140.8 divided by 18. So by dividing this one by this one, 140.8 by 18, you can easily find out number of total paint needed for the 2 coat of the same wall. Okay, so thank you so much. In the upcoming lecture we will discuss the 25th B.